commence our program on a spiritual note, I kindly request all present here to invoke the Divine Presence. I now request the esteemed dignitaries to initiate the ceremonial lighting of the lamp. Utmost honor, we extend a warm welcome to our distinguished speaker of the day, Mr. Naveen Jha. I kindly request Dr. Aditya Sharma sir and Dr. Manjula Jain ma'am to welcome our guest with a bouquet. Thank you, sir. Good morning. That's good. अब लग रहा है लीडरशिप पे टॉक होने वाला है. So thank you everyone for coming, and I highly appreciate. There's two important things today. One is the Entrepreneurship Day and the talk is on leadership. तो ये दोनों आपस में काफ़ी मिक्स हैं. All in my life, I enjoy to be entrepreneur and entrepreneurial person. मैं थोड़ा सा इसको समझाने की कोशिश करूँगा. I will do my best. And second thing, to understand the nuances of the leadership. और एक चीज़ बताना चाहता हूँ जो anyone can be leader and anyone can be entrepreneur. उसका कोई caste, color, creed, आप कहाँ पैदा हुए उससे कोई लेना देना नहीं है. There is enough research in the world. They have proved that leadership and entrepreneurship is a product of nurture, not nature. So all of you can be. जोर से बोलो थोड़ा. All of you can be leader and all of you can be entrepreneur. If you got lucky, everyone will know about it. If not so lucky, only you will know about it. So entrepreneurship में बहुत बड़ा luck भी play करता है. So जो भी आपने story पढ़ रहे होंगे, मूर्ति, रतन टाटा, all sort of lot of time luck has also played a role. Of course, they have done a hard work, etc. And I got enough privilege to work with all these guys and closely watching how they behave, what they do, why they do, why continuously they are doing it. So दो तीन चीज़ें मैं आपको बताना चाहता हूँ जो at this point of time जिस इंडिया में आप हैं is very kind of momentum driven India में हैं आप. And I don't mean any political system, but economically I'm more talking. 1993, I'm taking reference of 2023, so I'm just going 1993, when we had our reforms in 1991, our GDP was $500 billion in 1993. After settling down, policy बन गई, थोड़ा disruption हो गया, ये सब हमारा कितना GDP था? $500 billion, $500 billion बोल सकते हैं. आज की तारीख में 2023 में we have a $3.65 trillion. Simple maths, in 30 years we grow 6 times. In last 30 years में हम कितना grow हुए? 6 times. And you may be seeing जो लोग उस जमाने में पढ़े हैं उन्होंने देखा होगा infrastructure changes, धीरे धीरे सब कुछ अलग होते हुए देखा. The lot of reports and things are coming which saying that, and I have all the reason to believe that in next 20 years or 25 years plus minus, India will be $30 to $35 trillion economy. India will be
कहने का मतलब है जो अनदर 20-25 साल जो आपका साल है, यू आर गोइंग टू इंटर इन टू द इंडिया, जो हमारी इकोनॉमी कितना ग्रो होने वाली है? 10 times. What does it mean? That our economy will go in a roller coaster mode. और आपके लिए सबसे ज्यादा सुनहरा टाइम है, because in India in lifetime we didn't have a that fast growing economy, and in next मतलब 4-5 वेरियस एस्टिमेट्स हैं, कोई 2 साल आगे दिखा रहा है, पीछे दिखा रहा है. इफ यू एवरेज आउट ऑल, लेट्स से 20-25 years में 10 times our economy will grow. Is a huge opportunity or not? और वो आप ही लोग लेके आएंगे. हम लोग जो है वो 500 बिलियन से 3.65 ले आए, थोड़ा सा और मेहनत करके हम $5 trillion पे लाके छोड़ देंगे. उसके बाद जो 5 से लेके 35 की जर्नी है वो आपके कंधों पे है. So what does it mean? It means that India will need a lot of leaders. So I'm just giving the premises of हम लीडर बोल रहे, but why we need a leader? क्यों बनना है लीडर यार, सब तो ठीक ही चल रहा है. So why you want to be leader? So I'm giving you the basic premises of why India need a leaders, and I'm not talking political leaders. India need leaders in education. India need leaders in professionals, different CAs or doctors or engineering or architect or media or entertainment or you name it. So India need leaders in across the field if India has to grow and achieve her aspirations of becoming a $30-35 trillion at the end of your professional life, or maybe peak of your professional life, but at least my end of professional life, or the row filled by these row, they will also end their career by that time, but you will be on the peak of that time. So we need a lot of leader in all this sphere. So leadership become a very very crucial. मैं आपको नहीं बोलूँगा हाउ, बिकॉज मेरे से पहले बहुत लोगों ने बोला होगा आपको why hard work is important, why focus on your future, this that etc. बहुत सारे लोगों ने आपको बोला होगा and you are already too much flooded with that information. And I really don't want to be motivational speaker. I love to be motivated speaker. There's a difference. Because the whole life I have built a thing, and I was sharing with Registrar Sahab and Dean Academic Affair ma'am that Telangana government has invited me to see their incubation center is T-Hub. And I asked, अच्छा कितना square feet है? तो उन्होंने बोला 50,000 square feet है. मैं बोला इतना छोटा है? तो मैं बोला मैं भी बनाने का सोच रहा हूँ. तो उन्होंने बोला हाँ, but 50,000 is a big. I said I will make a bigger than yours. So I'm only giving you 3 years. Either you make a bigger than that, or I will be the biggest incubation center. So जैसे आपका मुरादाबाद है, वैसे ही एक कर्नाटका में एक जगह है called हुबली. आप लोगों ने सुना होगा, सुना आपने? Excellent. I'm not from Hubli. I don't know Kannada still. With lot of transmission loss, I can understand barely. And we have built the 1 lakh square feet of incubation center. And after the Bangalore in Karnataka, we have a highest number of startups. In 10 year of horizon. And you name the government scheme, we may have got the money from everyone. आप जिस स्कीम का भी डिपार्टमेंट ऑफ साइंस टेक्नोलॉजी, बायर एक्ट, अटल इनोवेशन मिशन, स्टेट गवर्नमेंट, सब ने हमको पैसा दिया.
what I mean that if a leader, you don't have an audacious goal, life का मजा नहीं. I love the word audacious. आपने सुना है नाम इसका? हैं? Audacity, audacious. ये जो word है मुझे बड़ा अच्छा लगता है. आज लाइफ में बड़ा गोल नहीं है तो लाइफ का पर्पस नहीं है. और वेन एवर आई सी समथिंग, आई से यार इंडिया में, और फिर मैंने उस सेक्रेटरी को बोला यार इट विल बी ग्रेट इफ यू कैन बीट मी विद इन 2 years. मुझसे भी बड़ा बनाओ और आई वांट कोई और उससे भी बड़ा बनाए. तो दैट्स इंडियाज ग्रोथ, बिकॉज नथिंग हैपन इट्स ओन. कोई ना कोई कहीं ना कहीं किसी चीज को एक बड़ा बनाने में लगा हुआ है, तभी कुछ होती है. जैसे आप लोगों ने एलन मस्क वगैरह का सुना होगा ना. टेक्नोलॉजी डजंट ग्रो इट्स ओन, कोई है जो उसको पुश किए जा रहा है. इफ यू सी इन स्पेस और इफ यू सी इन ईवी, that guy has pushed the technology envelope too far. आप आज if you get an opportunity seeing the Tesla, आप जैसे उसका बोनेट खोलोगे, you will see that, what you will see when you open the bonnet, what you see? Engineering student, हाँ? आप जब अपनी कार का बोनेट उठाते तो क्या दिखता है आपको? उसकी कार में इंजन ही नहीं है. Can you imagine the audacity of the person who can think a car without? So that's what I mean, the audacious goal, and that's what is the power of the leadership. So आज आपको सही में किसी चीज को, किसी कंट्री को, रीजन को, टेक्नोलॉजी को, इंस्टीट्यूशंस को ग्रो करना है तो you need a leaders who can really think the having the audacious goal. और उसमें फिर अपना लाइफ कमिट करना एक उसका अपना एक अलग मजा है. एंड आई एम श्योर हम जब आगे बढ़ते हैं तो कुछ मिस्टेक्स होता है, सीखते हैं, करेक्ट करते हैं, फिर बनाते हैं. एंड इट्स ए नेवर इजी जॉब. एंड कोई बोलेगा आप क्यों भाई, किसने बोला आपको इतना ऑडेशियस गोल रखने के लिए? क्योंकि आप में से मोटरसाइकिल कितने लोगों के पास है? या सबने चलाया होगा? कभी ऐसा मिला है जो सारे रोड की लाइटें ग्रीन मिलती हैं? हाँ? लाइट ही नहीं है? या ऐसे रोड मिलते हैं जहां पे एक भी गड्ढा ना हो? आज आप उस दिन का इंतजार करेंगे जब कोई गड्ढा नहीं, तो मेरे ख्याल से जिंदगी भर तक गाड़ी आप बाहर ही नहीं निकाल पाएंगे. निकाल पाएंगे? So there will be always some problem waiting for you. There will be always, it will take a longer time than expected. There will be always scenario which you haven't expected you will encounter. So that's a parcel of your journey. And मुझे लगता है वही उस जर्नी को थोड़ा सा इंटरेस्टिंग बनाती है. बाकी तो फिर नॉर्मल लाइफ है. अच्छा, ये जो इवेंचुअलिटीज है, दे मेक द जर्नी वेरी इंटरेस्टिंग. आप सब लोग यहाँ पे आए हैं, चाहे इंजीनियरिंग, मेडिकल, एग्रीकल्चर, जिस फील्ड से भी हैं. इन लीडरशिप देयर इज अ वन वर्ड कॉल, बहुत पढ़ाया जाता है उस पे, इज कॉल्ड क्रूसिबल्स. इज मोर क्रिश्चियनिटी से आया हुआ वर्ड है ये. उसमें ये कहा जाता है जिन लीडर का लाइफ में जितनी इवेंचुअलिटी ज्यादा होती है, उनकी लीडरशिप एबिलिटी उतनी ज्यादा ग्रो होती है. सो इफ यू आर लकी यू विल फेस मोर प्रॉब्लम्स. इफ यू आर अनलकी देन यू हैव नो प्रॉब्लम. तो लाइफ में कुछ मजा ही नहीं रहा. सो यू शुड बी ऑलवेज सेइंग थैंक्स टू द गॉड और हुएवर यू विश दैट मजा आ गया, इतनी लाइफ में प्रॉब्लम दी है. जो प्रॉब्लम है नहीं उसमें भी वो सोचते नहीं प्रॉब्लम है यहाँ पे, एंड देन दे ट्राई टू सॉल्व द प्रॉब्लम एंड मेक अ बिजनेस आउट ऑफ इट. बट हमारे पास ब्यूटी क्या है? हमारे पास तो रियल प्रॉब्लम्स है. सो वी कैन मेक अ रियल अपॉर्चुनिटी. एंड द सेकेंड ब्यूटीफुल थिंग वी हैव इज दैट वी हैव अ पीपल लाइक यू. Like if you say Japan, South Korea, US, Europe, their all young populations are declining. और इंडिया का young population is climbing. So what does mean that you have a problem, you have young people,
and you have some kind of ecosystem also got developed in last 20 years. But you have all the recipe of building your entrepreneurship and leadership. जो भी entrepreneurship को grow और leadership को grow होने के लिए चीज़ें चाहिए, वो हमारे पास सारा रेसिपी पूरा है. अभी बनाने वाला चाहिए और बनाने वाली चाहिए, sorry. We need a leader and entrepreneurial people who see this as an opportunity, see this as a life calling, and just get into it. And don't worry whether fail होंगे, pass होंगे. आप वो सोच के करेंगे तो कभी कुछ भी नहीं कर पाएंगे. So you decide, it's your call, whether you want to take a 30-35 year to reach this place, or this podium, or this picture, or you want to come in 5-6 years. So what does it mean? That you have to fast forward your way of working the way earlier used to happen. And abhi to it's a phenomenal the way things are changing. So there's no longer that, though its physical distance is hardly 5 feet or 10 feet, but यहाँ से यहाँ तक journey, life journey आने में या तो सारे बाल सफेद हो जाते थे या गिर जाते थे, जो भी केस. But अभी वो केस नहीं है. If you have really done some extraordinary work, people love to call you, love to invite you, love to make a part of it. Like I can tell you, I was the youngest member of Karnataka Knowledge Commission in 2012. And all were sitting members were either senior secretaries or retired vice chancellors. The chair by the Kasturi Rangan and those kind of people, they were chairing the meeting. Means they have spent their whole life to reach that place. But nowadays, if you really have audacious goal, if you really have something you want to do it, I think that journey you can shortcut. और एक चीज़ मैं और आपको बोलना चाहूँगा, just I want to make you guys last thing to free up from the mindset. जो ये $30 trillion की इकोनॉमी बनने वाली है, उसमें आपका हिस्सा कितना है? आप ये डिसाइड कर सकते हो ग्रेजुएट होके, you can be settled in 35,000, 40,000, 50,000, 1 lakh rupees job, retire in 5 lakh per month. Join 50,000, fast and forward 30 years, 5 lakh. Finish. If that's what you want to take from this $30 trillion, it's your choice. If you have a bigger your share in that $30 trillion, it's your choice. फिर बाद में मत बताइए किसी ने बताया नहीं. So I lag behind, sir. So on that basis, I just want to ask that being a college student, how can I manage that time? Sure, thank you. So what I would say that, and they will be also living in the hostel, or they were also living in a similar situations. However, the idea is only the 5% of the whole story. 95% is how you implement that idea. And let me tell you another part of the secret is that when you start any journey, his idea is different. And when you move along, the idea keep changing, reshaped. So I wouldn't discourage you. It doesn't matter whoever is speaking, whoever is doing similar idea. If you have so much conviction to that idea, I would say just go for it. It doesn't matter. When you start and when you move ahead, idea constantly changing. And it will take a totally different shape. And I'm sure when if you talk a lot of people who have started, so it doesn't matter if someone else has an idea. As it is so important for a business, my question is that how to manage or plan the financial aspects for the startup?